हाय, लास्ट वीडियो जो मैंने डेविल किंग ऑफ सिक्स्थ हेवन को बताया, somebody has asked me a question that it's too complicated. Probably I have explained little theoretical part of it. So somebody asked me, can you give some example? So let me give you some example, right? And I will try give you example starting from here to there. ठीक है ना? अब सोचो आपने you have walked into your office and in your office your boss is very confused. He doesn't know what to do. वो आज आपको कुछ बोलते हैं, कल आपको कुछ बोलते हैं, परसों आपको कुछ बोलते हैं. And every time you want to do something, there is some confusion happening. क्या होगा? From this aspect अगर मैं बोलूं, ये situation आपकी लाइफ में है. ये क्यों आपकी लाइफ में है? इसके पीछे भी एक साइंस है. I'm not going into that. But this situation is there in your life. Or say at your home, there is a dispute between your partner, your in-laws, sometimes even with children. ये सब होते हैं ना. तो पहले वाला एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि you have entered and your boss is so confused. Every day morning you have to come to office and you feel so agitated about it. यार फिर ऑफिस जाना है. That situation is an event happening in your life. It's getting stored in your subconscious mind. How it is getting stored in your subconscious mind? डर से. Usually this is creating a fear in your mind. And what will fear do? Fear will drive anger. जहां आप डरते हो ना वहां पे आपको गुस्सा आता है. फियर को काउंटर करने के लिए हम एंगर क्रिएट करते हैं, राइट? एक इवेंट है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में फियर करके डाल रहे हैं. इट्स स्टोरिंग एज ए फियर व्हिच इज क्रिएटिंग कॉजेस एज एंगर. नाउ देयर इज अनदर पर्सन. मैं अब नीचे से शुरू करता हूं. ही हैज गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट? व्हाई? बिकॉज ही प्रैक्टिसेस आर्ट टू. वो रेस्पेक्ट है अपने ऊपर. वो उस सिचुएशन में उसको रेस्पेक्ट से हैंडल वो रिगार्ड करे. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ माय लाइफ आई हैव हैविंग अ बॉस व्हिच इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड नॉट हेल्पिंग मी इन अ राइट वे. आई रिगार्ड दिस एज ए सिचुएशन फॉर मी टू लर्न. तो पहला चीज है उसकी अप्रोच. आई नो देयर आर कॉम्प्लेक्सिटी इन माय वर्क एनवायरनमेंट बट आई रेस्पेक्ट माय एबिलिटीज. ये सेंस ऑफ रेस्पेक्ट से वो अंदर आ रहे हैं ऑफिस की. वो सेंस ऑफ रेस्पेक्ट से उसकी बॉस के रूम में जा रहे हैं. वहां वो फियर से नहीं जा रहे हैं, वो रेस्पेक्ट से और 9th लेवल से जा रहे हैं, राइट? और वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इफ आई एम इन दिस सिचुएशन आई विल फाइंड वेज टू डू द बेस्ट आउट ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, राइट? And I will try to get a conclusion in that meeting because I know the person right in front of me is very confused. तो उस केस में when he or she will sit, because उसके अपनी लाइफ स्टेट में वो रेस्पेक्ट है, वो जो बात करेंगे ना उस बात में वो इक्वेशन बिल्ट इन होगा शुरू होगा. It will not happen overnight because you will not be able to develop that respect overnight. If I look into my life, I was in a situation where I was always encountering such type of people who used to take moments out to humiliate me and publicly in meetings and all. I have started saying that in every such situation I will learn something out of it and I will guide my team. So मैं जब मीटिंग में जाता था मैं ये सोच के जाता था कि मैं इससे क्या सीख के लाऊंगा. तो every such situation I used to say, okay, if this is what is creating confusion, can I do it like this? Can I do it create like this? ये एक एक्सरसाइज है. ये कोई एक दिन में मैंने अचीव नहीं किया था. But I never lose that hope, which is the sense of acknowledgement. And मेरी situation difficult है. I acknowledge it because I have that respect and regard. I will be able to work upon it. So that pushed me to look for opportunities to want to create that positivity. Second, not letting fear settle in my mind कि अगली बार काम करते हुए जाऊंगा, अरे यार ये करूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा. That fear I was not letting happen in my life. That started creating a true self within me. And then my mind was absolutely clear. Today I am able to make these videos because in my mind I have got complete clarity. I know what I do, I know how to do, and I know how to approach. It's not that in my life there are not difficult people. It's not that in my workplace I don't encounter such people who looks for opportunity because they don't have that sense of confidence. I continue to live with my art. Make sense? If you want more examples, write to me. So, अब जिस एग्जाम्पल बता रहे थे, in that, suppose you are not having this respect for yourself, तो क्या होगा? आप जब अंदर जाएंगे, आपकी माइंड में वो फियर डेवलप होगा. फियर आपकी एंगर डेवलप कर देगा. अब एक चीज बताओ, be very honest. A person who is always living in the state of fear and anger, can he be healthy? उसकी माइंड की थिंकिंग 6th लेवल में क्या सोचेगा हर वक्त? Revenge, anger, greed,
responses in a manner which is hurtful, and that reaction will come where, you know, to the other set of people where he has got a more influence. तो क्या होगा, रिश्ते सिक हो जाएंगे. Physically every such people will have BP problem, sugar problem, cholesterol problem. Half the problem that we feel in our body because of the sickness is because the life state we maintain. The R2A, that respect because we lack, we get reflected in. And ये sixth level जो mind है ना, वो कल sick सोचेगा. वो हर thinking will be out of that sickness, and that sickness will be reflecting both physically on various diseases and mentally at a very poor lifestyle, irritated, depressed, agonized. Healthy तो वो रह ही नहीं सकता है. If you want to become healthy, you need to develop respect for yourself. If you want to become healthy, take your situation as an opportunity to create that true self for yourself. Because this true self, in the subconscious mind, it will pick up those positive thinking out of it and will drive your mind कि नहीं यार, इतनी भी इम्पैक्ट करने मत दो, इतनी भी पागलपंती मत करो, नहीं तो एक एक बात पे आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा. इतनी भी पागलपंती मत करो. ठीक है, उन्होंने बोला है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग. तो सिक्स्थ लेवल में माइंड में ना वो पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, एंड दैट विल क्रिएट योर पॉजिटिव हेल्थ. It will not take you to sickness. I hope this has explained you how it correlates back to the 6 causes of sickness and how it becomes the work of devil. That fourth hindrance, which is devil king of 6th heaven, is very critical to understand. Because हमारा mind हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. उस चीज को कंट्रोल में नहीं लाओगे, the enmity and devilish forces will govern your life and you will fall sick. Thank you very much.